अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स. सो हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बट वी हैव डॉक्टर अल्ताफ मुकाती विद अस हियर एट द 19th कॉन्वोकेशन ऑफ ज़ाबिस्ट यूनिवर्सिटी. उनसे थोड़ी सी बात करते हैं इस हवाले से. अस्सलाम सर, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू वेरी मच. सो सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ज़ाहिर है हर साल आप देखते होंगे चेहरे पे मुस्कुराहटें हैं, उन्होंने अपना सफ़र ज़ाबिस्ट में तय किया, बहुत ऊंच नीच देखी होगी, अब वो प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखने जा रहे हैं. तो सर, जाते जाते आप इन तमाम स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही होगा कि अच्छे और कामयाब इंसान बने. सिर्फ पढ़ाई करने का मकसद यही नहीं है कि आपने सिर्फ किताबी चीज़ें पढ़ी हैं और उसको याद रखी, बल्कि ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आना चाहिए. आपकी पर्सनैलिटी जो है लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, लोगों को आपसे एक अच्छा मैसेज मिले, एक अच्छे इंसान बने, अच्छे ह्यूमन बीइंग बने. अगर ये कैरेक्टरिस्टिक हैं और साथ में आपने डिग्री ली है तो फिर स्काई इज़ द लिमिट. फिर आपको दुनिया में कोई भी कामयाबी से नहीं रोक सकता. तो पहला माइलस्टोन जो है आज आप क्रॉस करने जा रहे हैं, और अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे या हायर स्टडीज़ की तरफ जाएंगे, ये तो आप पे डिपेंड करता है. मगर जहाँ पर भी आपने पर्सनल कैरेक्टर को ऊंचा ले गए या इम्प्रूव किया, आप हर जगह कामयाब होंगे. और पर्सनल कैरेक्टर का मतलब है बहुत सारी चीज़ें आती हैं. आप पंक्चुअलिटी आप में होनी चाहिए, सफाई निस्फ ईमान है मुसलमानों का, तो ये है. और सफाई से मुराद सिर्फ घरों की सफाई या मोहल्ले की सफाई नहीं होती, जहनी सफाई भी होती है. जहन आपका साफ़ होना चाहिए, उसके अंदर कोई साजिशी जहन नहीं होना चाहिए, अच्छा जहन होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, आपके अंदर इनोवेशन के आइडियाज़ आने चाहिए. ये अच्छा करेक्टर होता है. फिर आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, दूसरों के टाइम का ख्याल करना चाहिए. ये सारे करेक्टर आपके अंदर मौजूद हैं, तो कोई वजह नहीं कि हम बाहर की कौम से आगे ना निकल जाएं और कम से कम उनके बराबर हो जाएं. ये मेरी. थैंक यू सो मच सर. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. सो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अकील, हु इज़ अ रजिस्ट्रार ज़ाबिस्ट, एंड हमारी जो 19th कॉन्वोकेशन है इसको वो हेड कर रहे हैं. सो तो आइए उनसे इस कॉन्वोकेशन के हवाले से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. आप सुनाइए. अल्लाह का शुक्र है सर. तो सर, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ईयर जब कॉन्वोकेशन हुई थी लॉकडाउन की वजह से, वो ज़ाबिस्ट यूनिवर्सिटी के 100 कैंपस में करवा दी थी, और ना पेरेंट्स आए थे, ना लोगों के स्पाउसेज आए थे, ना उनके सिबलिंग्स आए थे, कोई नहीं आए. तो इस बार हॉल्स हैं और स्विच किया गया इसको, बैचलर्स को संडे पे रखा है और मास्टर्स प्रोग्राम वालों को सैटरडे पे रखा है. इस हवाले से सर थोड़े से कमेंट्स पास करें कि ये कैसा आपको डिफरेंट, इसमें क्या यानी कि बोलना चाहेंगे आप? ओके, देखिए, बेसिकली कॉन्वोकेशन इज़ द इवेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, और इसमें असल चीज़ जो है वो ये है कि स्टूडेंट्स ही के लिए अरेंज किया जाता है. अनफॉर्चुनेटली 2020 के अंदर लॉकडाउन की वजह से हम कॉन्वोकेशन को ऑनलाइन करवा पाए थे, और अभी हमने जो है 2021 के अंदर इसको फिर इन हाउस करवाया था, इन विच पेरेंट्स वर नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ द स्पेस constraints. But now we are welcoming all the parents and along with the students, or it's a very colorful event, or Expo Center is a very good place to conduct such an event. तो ये एक बहुत अच्छा event है जो हम organize इस वक्त कर भी रहे हैं, और inshallah that would be success for the students as well as for Zabist. All right, thank you so much sir for your input. Thank you. Assalamu alaikum. So we have our esteemed member from Zabist University, Director IT Sir Asif Ali. Sir Asif Ali Qadri. तो सर कैसा लग रहा है आपको कॉन्वोकेशन पे आके, इतने सारे स्टूडेंट जिन्होंने 2 साल या 4 साल का सफ़र यहाँ तय किया है और ये आपके अंडर थे, जाहिर सी बात है, तो मुस्कुरा रहे हैं, उनका आज एक कैरियर, वो प्रोफेशनल लाइफ में ज़ाहिर है अपना कदम रखने जा रहे हैं, कोई दुआएं या कोई मैसेज आप उनको देना चाहेंगे जाते जाते? हाँ, डेफिनेटली. इतनी देर जब मेहनत की जाती है तो फल भी ज़बरदस्त मिलना चाहिए ना. तो ये फलों की शुरुआत है इनको लिए. पहला फल तो इनकी डिग्री है जो इनकी मेहनत की है, और सबसे बेहतरीन बात यह है कि मेरिटोरियस डिग्री है एक, और इन्होंने बहुत मेहनत की है, इसीलिए यहाँ पर आए. हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, आधे में इनकम्प्लीट छोड़ के उनको जाना पड़ता है, बिकॉज दे कैन नॉट कोप अप विद प्रेशर, और लोड भी है, क्योंकि फिर हमारे पास प्राइमरी जो चीज़ है वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए फिर कंप्रोमाइज़ नहीं करते कहीं पे हम. तो ये है कि ये जो आपको अभी बच्चे जितने नज़र आ रहे हैं, इतनी मेहनत के बाद, कई रातें जागने के बाद, असाइनमेंट्स करने के बाद, क्विज़ेस देने के बाद, एग्ज़ाम्स देने के बाद, इतने सेमेस्टर्स इन्होंने पास किए हैं, तो अब उनको डेफिनेटली दे डिज़र्व इट. और I wish them well in their future,
और बहुत सक्सेसफुल रहेगा मेरे मुल्क के लिए, बिकॉज वी आर हेयर फॉर आवर कंट्री। तो वो होता ही इसीलिए है कि हम जब ये सब कुछ करते हैं तो प्राइम उसमें जो टारगेट होता है is to produce this people with science and technology and businesses, and ताकि बेहतरीन इस मुल्क को एक क्रीम मिल सके जो आगे काम कर सके, क्योंकि ये मुल्क चलाने वाले हैं, दे आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ऑफ कोर्स। तो वो फ्यूचर जो है वो बेस्ट होना चाहिए। और कुछ अगर आप मालूमात करना चाहें, मेरी तो बहुत दुआएं हैं इनके लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सदा खुश रहो, आबाद रहो। With me, I have one of the most amazing teachers at SZABIST, and every single student can vouch for it. Ma'am Nadra Zaidi, and she is one of my favorite teachers. She has been very impactful from the very first semester that she has taught me, and I am so sure that she has been an important part of the students who are graduating today. So, ma'am, how are you feeling seeing all your छोटे बच्चास graduate? यू राइट अबाउट द छोटा छोटा बच्चास, वो माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चों से वो ब्लॉसम होके आज they are going to be wearing their caps and their gowns, and it is a very proud moment as a teacher. Yes. Because when you first enter the university you're actually very raw, and then by the time you graduate you have taken a certain form, and we're proud of that form because we have contributed to it. But I think the convocation is special because it's a day for the students and we celebrate with the students. Yes. The achievements that they have done, the hard work they've put in, and it makes us feel special also along with the students because we've contributed to it. And there's a prayer on behalf of the teachers that they go out there into the world and they're successful. So I think many congratulations to anyone who's graduating today, and to all my students who are बहुत मुबारक हो, खुश रहिए. Alright, that's very sweet of you. Thank you so much. And one thing I would like to ask you that what is the difference when you're teaching the master's level student and the bachelor's level student? And do you think that उनकी जिंदगी में graduation is something different and masters वालों की जिंदगी में graduation is something different? So at the undergraduate level, I think the sense of how they perceive the world is slightly different because many of them have not done jobs before. They may be in the process of it, but the majority are not. But at the graduate level, they are already working, many of them, and it's just a transition to a higher academic level. So their mindset is a lot more serious. It's a lot more focused in that they've decided what their career path is. So this degree is going to definitely help them. It's going to promote them to the next year in their career. But when you're an undergraduate and you've just graduated, many of you may have a certain degree, but then you may use transferable skills to move to some other area. So there's a difference in the mindset. All right, and I'm like so happy to see all the teachers coming here, joining the students, and thank you so much for contributing to the cause. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. With me, I have two very fresh graduates of Masters in Public Health, and I'm sure they have achieved a lot in their life. So let's listen from them. सबसे पहले प्लीज आप मुझे अपना नाम बताएं. थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर गुलाम अली बोसार है और मैं फैमिली मेडिसिन का ड्यूअल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ एंड एमएससी इन डायबिटीज एंडोक्राइनोलॉजी एज वेल। इसके साथ साथ अभी ज़ाबिस्ट से एमएसपीएच किया। इसके अलावा मैंने लॉ भी की हुई है और एमआरसीजीपी फ्रॉम यूके एंड गोल्ड मेडलिस्ट इन एमआरसीजीपी। Alright, that is amazing. Like I'm already so motivated कि मुझे भी ये सब करना है जिंदगी में. My name is Dr. SZABIST Karachi. I'm double postgraduate in family medicine and diabetes. Okay, I'm double gold medalist as well as I'm also an honor holder from my graduate degree. And now I did complete my MSPH from SZABIST, and I, Alhamdulillah, got second position and silver medal from here SZABIST. Well, I am feeling so privileged and honored to be standing with such amazing individuals. Tell me a little bit about your journey here at SZABIST, particularly masters in public health. So, matlab it's a little different from what you have been doing throughout. Basically, it's something different. I must say, it's a clinician plus a healthcare system. It's a policy thing. In public health, we usually do
take care of the whole public and the community. And like a physician, all the time we do our clinics, we do check our patients and treat them. But in public health, the whole thing is that for the community we do something. We make policies for the betterment of the health of the community, and from SZABIST, as I completed my MSPH, it really groomed my academics. It really groomed my academics in public health. And what about your experience here at SZABIST? Yeah, it was a great atmosphere for the learning as well, and I must add few lines in for my. I must say this is now a STEAM institute for myself as well and other for as well. So my experience is that this is a good opportunity for those people who are in working in the services. Very great atmosphere for the learning, because this is the weekly programs in the SZABIST, and must enjoy this, must avail, and I will advise to all these people who are very much busy in the services time must get admission in the MSP as well to get an enhanced academic sessions as well. Alright. एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत शिद्दत से आप दोनों से पूछना है, since you guys have so many degrees, how does it feel like to be back in a convocation state? Feel very proud, alhamdulillah, feel blessed, very much blessed, because it's our 4th or 5th convocation after graduation, and taking medal from like in convocation is really a heavenly thing. It's really a blessing. Of course, like as many medals as you could get, you will get them all, mashallah, inshallah. Continue for PhD as well, inshallah, and inshallah get medal from that degree also. And what about you, sir? You have so many attended so many convocations, so many different domains. So, वो कैसी feeling है? Yeah, actually, I must add here one line that the knowledge is still and the education has no end, because everything is when you are growing yourself. You must get the enhancement in your academic sessions. So particularly, as you have earlier mentioned, that we have got so many degrees, but now we have a journey to get the PhD as well, and we are so much planned and targeted over and keeping our sharp eye over that. So inshallah, and hoping for the best, and let's see what happens. So I must say that, and advise to all these people to get in admission in the MSP as well. So this is a great journey and a very learning atmosphere as well. We spend a lot of time in MSP as well. Alright, I wish you all the very best, and you guys have, this 5-minute talk has been so inspirational to me. So we have an esteemed faculty member with us, and she is the program manager of an MS. Let's start with her name. डॉक्टर सारा वली काजी। एंड मैम यहाँ पे आप कॉन्वोकेशन में 19 कॉन्वोकेशन में मौजूद है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे मौजूद होंगे, मुस्कुराहट है चेहरे के ऊपर, 2 साल का सफ़र उन्होंने तय किया है। बहुत सारे प्रोफेशनल लाइफ में पहले से होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो अभी कदम रखने जा रहे हैं। तो जाते जाते अपने स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मेरे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो तो MS के हैं, मैनेजमेंट साइंसेज के, कुछ प्रोफेशनल्स हैं, कुछ अभी जा रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में। मैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहती हूँ, ताकि वो अपने फ्यूचर में और ज़्यादा तरक्की करें। और आई होप सो कि जो उन्होंने अपने 1.5 ईयर्स में लर्न किया है, उन सारी चीज़ों को वो प्रैक्टिकली अप्लाई करें और कुछ सोसाइटल बेनिफिट उससे हासिल करें। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान छोड़ के जाने की बात करें, इमिग्रेशन ले लें, क्योंकि दिस इज़ आवर कंट्री एंड वी हैव टू सर्व इट। प्लस मेरे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो PhDs कर रहे हैं, निकल रहे हैं, और वो 7-7, 8-8 साल बाद निकल रहे हैं। तो उन्होंने तो एक ये समझे कि उनकी ये शुरुआत है बीइंग अ रिसर्चर, कि अब वो क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये समझे कि पूरा पाकिस्तान उनकी तरफ देख रहा है और हम सब मुंतज़िर हैं कि वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। Alright, thank you so much for your time, ma'am. Thank you so much. With me, I have Dr. Shumaila, a very fresh doctor completing her PhD. And please tell us a little bit about your degree, what you've done your PhD in, and how your journey has been in SZABIST. Okay, so I started, it was a very long journey. I started in 2013, but it was a personal journey, like it's not the same for everyone. So I had my kids in the middle, and then I had that thought, should I continue or should I not continue? And everyone is giving me suggestions that now since you have had kids, so now you should worry about making them PhD rather than you getting your PhD. So, but then, you know, after 2.5 years again, I started out, again continue my journey, and it's been wonderful. There has been a lot of challenges, but I think all is well that ends well. So it's a very happy day, it's a very proud day for me, for all the PhDs here. So, and thank you SZABIST, thank you program managers,
thank you, our HOT, our deans, and everyone, all the upper higher management of SZABIST. Thank you. All right. So, well, we are also so proud of you that you managed everything with, your family, academics, and probably work as well. So, I mean, was Full-time faculty as well here. all right. तो मतलब बहुत ही मुश्किल हो गया होगा आपके लिए करना, but we see you coming here such a long way and you inspire, I'm guessing, so many people around you as well. It is really, I'm here to give power to the people who are in their journey right now, because it's a difficult journey, but it is worth it. So please continue doing it. Acha, what has been the most difficult or the most challenging or maybe you can say frustrating and irritating time of your study? क्योंकि मतलब बच्चे तंग करते होंगे या फिर फैमिली को टाइम देना होता होगा या लोगों की बातें सुननी होती होगी. हाँ नहीं, लोगों की बातों की तो खैर आई नेवर केयर दैट मच. ये होता था कि आप यू वांटेड टू वर्क, यू वांटेड टू फिनिश योर वर्क, बट थिंग वाज कि आपके पास इतने ज्यादा टास्क आ जाते थे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता था. जब आप दोबारा बैठते थे तो आपको दोबारा से शुरू करना होता. सो दैट वाज लाइक काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग टास्क, एंड आई वाज थिंकिंग अगर वो ना होता तो शायद जल्दी हो जाती. बट शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल द प्रेजेस टू अल्लाह के हो गई अल्हम्दुलिल्लाह. और आई एम श्योर आपके बच्चे तो बहुत खुश होंगे और वो जाके सबको बता रही होंगी मेरी मम्मा की PhD हो गई थी तो they were, but I'm like kind of missing them today because they were young. They are almost 8, but they were not allowed to come because 18 years से अंदर allowed नहीं है. But I think मैं उनको इंशाल्लाह live दिखा दूँगी. all right. So yeah, it's being streamed at the SZABIST official page, the 19th annual convocation of SZABIST. Congratulations to all the graduates today and wish you all the very best. Thank you very much. Congratulations everyone. Thank you. So we have an esteemed faculty member with us. Let's start with his name and the program he is in. So I am Dr. Hamad Afzal Kiani and I am Associate Professor in the Department of Biosciences, Faculty of Life Sciences here at SZABIST. Alright, so sir, obviously a lot of your students are graduating. 2 साल का सफर उन्होंने तय किया है. Most of them would have been bright students, कुछ उनमें से तंग करने वाले भी होंगे, but they all are smiling and अब वो अपनी practical life में कदम रखने जा रहे हैं. तो क्या मैसेज आपका जाते आते अपने स्टूडेंट्स को? So हमारे डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे तंग करने वाले स्टूडेंट्स तो नहीं थे, and most of them were very good. And with masters, we were at the advantage in both the programs, that is in MS PH and MS Biosciences, that most of our students were working in the field. So 60 to 70% were those who were in the field. They are working in the diagnostic labs, in the NGOs. So we were kind of at an advantage that they had a discipline, how to be in the class, how to work or how to meet deadlines. So ये तो उन्होंने जो एकेडमिक्स में अचीव किया है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. बट उनके लिए टेक होम मैसेज या किसी भी स्टूडेंट के लिए जो ग्रेजुएट हो रहा है वो यही है कि वट एवर यू हैव लर्न हियर एंड टीचर्स हैव पुट देयर हार्ड yards and their hard work to teach you. So whatever you have learned here, it's time to apply out there in the field. And with MS Biosciences and MS PH graduates, it's very imperative that the fields in which they are working, they need to be at their best, because for public health graduates, they are working with individuals, humans mostly, and they are working on the interventions जिनका community में बहुत ज़्यादा importance है. और इसी तरह जो MS Biosciences की graduate हैं, उनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली दे आर वर्किंग इन द डायग्नोस्टिक्स या फिर रिसर्च लैब्स में. सो उनके रिजल्ट्स या जो अचीव कर रहे हैं वहाँ पे, उसका इम्प्लीकेशन है ऑन द कम्युनिटी इटसेल्फ. और ऑब्वियसली एक और चीज़ भी कर सकते हैं, और सारे ग्रेजुएट्स के लिए है कि टू get up their tier of academics, like PhD के लिए भी option है, and we have very good institutes in Pakistan, within Pakistan. In fact, SZABIST itself is offering PhD biosciences, so student के लिए वो एक opportunity भी है. और प्लस ये है कि internationally और nationally हमारे graduates, I can say for sure कि वो compete कर सकते हैं with any good skill. तो सर बहुत सारे मास्टर्स के बाद PhD के लिए इंटरनेशनली अप्लाई करते हैं, तो क्या आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, आप पुश करते हैं कि बिल्कुल जाएं, या आप कहेंगे कि नहीं, दे शुड स्टिक टू पाकिस्तान और यहीं पे अपनी PhD परस्यू करना स्टार्ट करें? ऑलराइट, अ वेरी गुड क्वेश्चन आई मस्ट से. लेकिन इसमें द आंसर इज नॉट सो सिंपल कि वो परस्यू यहाँ करें या वहाँ करें. हर किसी का सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डिफरेंट होता है. सो अगर कोई स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकता है इंटरनेशनल एक्सपोजर की, तो दे मस्ट गो, क्योंकि हमारी कंट्री में या जनरली भी एक नॉर्म है कि अगर आप इंटरनेशनली एक्सपोजर ले लेते हैं तो आपको ना सिर्फ अपनी कंट्री का बल्कि इंटरनेशनल रिसर्च का या डिसिप्लिन का, वर्क एथिक का भी एक्सपोजर होता है. सो हेल्पफुल होता है. प्लस लोकल्स के साथ और इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ एक ब्लेंड जो बनता है, वो दैट मेक्स इट अ वेरी गुड इन्वायरमेंट प्रोफेशनली. सो इंटरनेशनली बिल्कुल जाना चाहिए,
बट लोकली हमारी इंस्टीट्यूट्स या हमारे ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे भी पीएचडी ऑफर हो रहा है, जहाँ पे भी एकेडमिक्स की फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे भी पीएचडी करने में देयर इज़ एब्सोल्युटली नो हार्म, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी इन नो वे आर लेस देन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, सो वो वहाँ अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और तकरीबन तमाम ही फील्ड में पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट अगेन आई मस्ट से कि पब्लिक हेल्थ में पीएचडी का इस वक्त बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि वो बेस्ट, एक तो ऑब्वियसली सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एकेडमिक्स है दैट एनी स्टूडेंट कैन अचीव, सो वहाँ एक अपॉर्चुनिटी अगर स्टूडेंट टेकअप करना चाहे। और एमएस बायोसाइंसेज जो कि करंट सिनारियो है, इसमें सिर्फ मास्टर्स की बेस पे एज एन एकेडमिक्स आपको जॉब श्योरिटी नहीं है। अगेन हैविंग सेड दैट, जॉब श्योरिटी कहीं पे भी नहीं है। अगर बीएस का स्टूडेंट है, पीएचडी का स्टूडेंट है, जिसने पीएचडी कर लिया, उसके लिए भी जॉब श्योरिटी नहीं है। बट अगर पीएचडी करते हैं तो आपके चांसेस आर मोर कि आप अक्वायर कर सकें एक एम्प्लॉयमेंट। और ऑब्वियसली पीएचडी का एक पर्पस एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, लेकिन दूसरा पर्पस ये है कि आपकी लर्निंग है, और जो लर्निंग आप यहाँ लेते हैं वो इम्पार्ट कर सकते हैं नॉलेज टू अदर्स एंड योर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। With me, I have one of the most important personalities for the Life Sciences Department, Dr. Kashif Ali, who is the Dean of Faculty of Life Sciences. Welcome to the 19th Annual Convocation, sir. Thank you so much. All right, sir. So, how do you feel seeing your students graduate like with professional degrees? Well, this feeling cannot be matched with anything. I'm so proud. I feel so encouraged for the next year as well. And looking at the students and having seen them grown throughout the time that they have spent with us, and the things that they have learned, the skills that they have developed, actually make us very proud. So this is the moment for them to be proud and for us to be proud as well. And I'm very much happy to see them reaching this milestone. Well, so my seniors have always told me that you are one of the most cooperative people that they have come across in the department, and I think teachers have a very important part to play with their, not just in the classroom but outside of the classroom as well. So what would you say about that? I mean, I'm sure you're contributing to hundreds of students' lives every year. Yeah, the feeling is absolutely fantastic. And cooperative, I'm very happy to know that if they feel like that. But this is, I believe, it's a part of my job as well. Not only to teach them in a classroom like an conventional teaching, but also to make them what you can say comfortable in any aspect. Not only learning, but also if they need anything, and I can feel if I can be helpful in any of the issues that they are facing. So that's a great feeling for me. I'm very happy about that. All right, we're also very happy to see you here and changing lives for these professional students, and I'm hoping that you will have one of the proudest moments of your life seeing them all walk on stage. Yes, actually, and one more thing that I would like to mention, if you allow me, Department of Biosciences are going to have their first PhD this year. So, and one of them is my student. So, for me, it's a happiest moment. So, there are so many things that the Biosciences Department has to achieve in future. And again, I am really happy today. All right, I'm hoping that I will also be one of the students that could make you proud one day. For sure. I'm very confident. Inshallah. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. So we have an esteemed member with us, Dr. Faraz Junejo, who is the head of the Mechatronics Department. Assalamu alaikum, sir. Salam. How are you, sir? I'm fine, thank you. Yourself? I'm good, sir. Thank you for asking. तो सर बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके ग्रेजुएट हो रहे हैं, बहुत सारे चेहरे जाने पहचाने होंगे. A lot of them would have been bright students. कुछ ऐसे होंगे जो शायद तंग भी करते हो, लेकिन सब मुस्कुरा रहे हैं. जाहिर है अब इसके बाद अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखने जा रहे हैं. तो सर क्या दुआएं, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी खुशी का दिन है इन लोगों के लिए भी, इनके पेरेंट्स के लिए इन पर्टिकुलर. एंड आई बिलीव के now the actual part begins. Once they have been through this 4 years of time at SZABIST, now I believe they are well equipped. Inshallah, they can go in society, they can serve society, and actually they can be contributing to society in a positive manner, for which they have been training here for last 4 years. Because we believe in a well-rounded individual, so it's not just the studies that we focus on in SZABIST, but we also pay attention to their soft skills. So I wish them all the luck, and I believe they will be a very good addition to the professional society of Pakistan.
Or sir, another question that I had to ask you is that a lot of the students will be pursuing PhD. तो क्या कहेंगे आपके should they go internationally या वो पाकिस्तान में रहते हुए अपनी PhD को pursue करना start कर दें? What is your advice? Okay, so that pretty much depends on personal circumstances. My preference would be that once they've graduated, whether they've done undergrad or masters, they should at least have 2 years of experience in professional life, be it in Pakistan or be internationally. But they must not pursue their PhD straight after their postgraduate studies. Okay, so they should have at least spent 2 years in industry, and then because that will going to prepare them for the true learning. When they will pursue their PhD. So that is my advice. All right. Thank you so much, sir. Welcome, beta. Okay, all the best. Assalamu. With me, I have Dr. Malbari, who is the faculty of social sciences here at SZABIST, and I'm sure you're feeling so proud of your students graduating with professional degrees. First of all, congratulations! You have made an important, you have played an important role in their life. How are you feeling on this 19th annual convocation of SZABIST? Well, I feel just absolutely exhilarated because the students are now today, with all their hard work, they are going to get their professional degrees. So it's a very, very exciting time for us. I wish them all the very best in the future, and I hope they can achieve milestones in their own careers, because I think the social sciences department is a very important department. Pakistan needs numerous social sciences to solve problems, both internal and global, and I think this forte, this subject which SZABIST is offering to its students will create a milestone and will create the knowledge base that we need to solve social problems that exist in our country. Yes, and you've been teaching for like years now. Yes. So what is your most favorite part about teaching master students specifically? Well, the fact remains is that I get to teach numerous subjects every year. Sometimes it's globalization, human rights, gender, etc. So it's sort of, and I keep up to date with all the newest literature that is available. So it sort of enhances my own knowledge through the current issues that are there in the world, and it also gives the students an opportunity to discuss and debate these global issues that we are facing currently in our own country as well as internationally. Well, I'm sure you have also been through a series of conversations, and you're here as a faculty, as you know, one of the most prestigious teachers in SZABIST, and I am just so glad and thankful to each one of you that you're making a important role in students' life. Thank you so much. It's just a pleasure teaching at SZABIST. I think SZABIST is one of the most wonderful universities, and I have done my PhD from SZABIST itself, so it's like home for me and to me. So I just wish all my students the very best, and I hope everything just works out well for them in the future. Alright, since you're a PhD graduate from SZABIST, how nostalgic are you today? Very. I was just talking to my mother today that every time I go for a convocation, it reminds me, because I myself was a valedictorian, so it just reminds me of that exact moment when I gave a speech, and it's sort of very exhilarating for me. And I'm sure you're going to have a lot of fun seeing all of them walk on stage. I wish you all the very best, and all of your students as well. Thank you so much, dear. Thank you very, very much. So we have an esteemed member present here with us, Dr. Imran Amin, the HOD of Computer Sciences. आइए उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि 19 कॉन्वोकेशन के बारे में. सलाम सर. वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर आप? अल्लाह का एहसान है जी. सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके ग्रेजुएट हो रहे हैं, सबके चेहरे पे मुस्कुराहटें हैं, बहुत सारे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे होंगे जो तंग भी किया करते होंगे, लेकिन नो डाउट अब वो इसके बाद अपनी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर, लाइफ के अंदर कदम रखने जा रहे हैं. तो सर, क्या आपका मैसेज है, पैगाम है, क्या दुआएं देना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को? फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब ग्रेजुएट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन. इनके वालिदैन का एक सब्र का वो था, आजमाइश का एक पूरा सिलसिला था जो चला और वो ख़त्म हुआ, और अब ये प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो रहे हैं. और इनके लिए ज़ाहिरी तौर पे कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है वो बहुत वसी है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मौक़े हैं आजकल के दौर में. तो बहुत सारे ग्रेजुएट्स तो पहले ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि और ज़्यादा बेहतरी की तरफ वो जाएंगे. सर, मेरा एक सवाल आपसे और है, क्योंकि आपको ज़ाहिर एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा इस हवाले से. अब मास्टर्स के बाद पीएचडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो परस्यू करते हैं, तो आपकी क्या राय है, क्या एडवाइस है? शुड दे गो फॉर एन इंटरनेशनल पीएचडी या वो पाकिस्तान में रहते हुए पीएचडी परस्यू करना स्टार्ट कर दें?
देखें आج कल जो वर्ल्ड है वो ग्लोबल विलेज है और दुनिया में इस वक्त जो आईटी की डिमांड है उसको अगर आप मद्देनज़र रखें तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो आईटी की फील्ड या इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। एकेडमिक्स में पीएचडी करना और फिर बाद में यूनिवर्सिटी की तरफ रिसर्च प्रोफेसर्स की तरफ आना वो एक चैलेंजिंग टास्क तो ज़रूर है और कुछ चंद एक लोग तो ज़रूर आते हैं, लेकिन फिर इंडस्ट्री की पुल इतनी ज़्यादा है कि पीएचडी करने वाले भी वहाँ चले जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपने किया वो इंटरनेशनल और नेशनल के हवाले से है, तो वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज। जो यहाँ से पीएचडी करता है या बाहर से करता है, डिमांड उसकी इक्वल है और जितना ज़्यादा वो अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह अवेलेबल है, वो वर्ल्ड इज़ ओपन फॉर एवरीवन। All right, thank you so much, sir, for your time. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। So we have another student here with us, and इनसे जानते हैं इनके तासुरात कॉन्वोकेशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। What is your name and आप किस प्रोग्राम से ग्रेजुएट हो रहे हैं? First of all, my name is Mohammad Numan and I have graduated from Masters in Project Management. All right, and आपने बैचलर्स कहाँ से किया था और किस फील्ड में? बैचलर्स मैंने बिजनेस स्टडीज में किया था फ्रॉम प्रेस्टिज यूनिवर्सिटी। तो ज़ाबिस्ट में आपका सफ़र कैसा रहा? SZABIST was amazing. Like the experience in SZABIST, the academic level of SZABIST is totally different. मतलब मुझे कोई मैच इसका दिखा नहीं अभी तक और कराची के अंदर इस लेवल का इंस्टीट्यूट माशाल्लाह आई एम ऑनर्ड कि मैंने यहाँ से पढ़ा और मुझे यहाँ की डिग्री मिली, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, एंड इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। अच्छा सर, तो जैसे आपका मास्टर्स कंप्लीट हुआ है, आप प्रोफेशनली कुछ करते हैं या अभी स्टार्ट करेंगे? Yes, I'm running my own business basically. I have a business of leather manufacturing and export. Basically, I'm from Sialkot and I have a manufacturing unit in Karachi as well. So that's why I am studying here. और मैं अपना बिजनेस भी Alright, so what is your advice for the undergraduates, क्योंकि कल हमारे बैचलर्स के प्रोग्राम के स्टूडेंट्स भी ग्रेजुएट हो रहे हैं, क्या उनको फॉरेन मास्टर्स के लिए जाना चाहिए या पहले एक आध साल वो फील्ड में गुजारें, थोड़ा सी स्किल्स हासिल करें, एक्सपीरियंस हासिल करें और उसके बाद मास्टर्स की तरफ जाएं? मैं अपनी लाइफ को देखते हुए जो समझता हूँ, क्योंकि मैं इंटर के बाद प्रोफेशनल लाइफ में आ चुका था, अपनी बिजनेस में आ चुका था, और आई थिंक वो एक बेस्ट स्टेज है कि आप जितना जल्दी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आप बढ़ जाएं, आपको एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा मिलेगा। जैसे ही आप अपने बैचलर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, उसमें जब आपका साथ साथ एक्सपीरियंस भी चल रहा होगा, साथ आपकी स्टडीज़ चल रही होगी, आपको बहुत ईजीली और बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, और मास्टर्स तक पहुँचते हुए तो आप बहुत आगे पहुँच चुके होंगे। ऑलराइट, तो कोई मैसेज, मास्टर हो जाएगा, कोई मैसेज आते आते अपने दोस्त अहबाब के लिए जो ग्रेजुएट हो रहे हैं? दोस्त अब आप सबको माशाल्लाह बहुत मुबारक हो, और हम सब ने टाइम बहुत अच्छा माशाल्लाह साथ गुजारा और एक दूसरे की हेल्प करते रहे, बहुत सपोर्टिंग थे सब माशाल्लाह। ज़ाबिस्ट के और भी जितने भी स्टूडेंट्स थे, किसी से कुछ पूछ लो, कोई मसला मसाइल नहीं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, और सबको आगे फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे, और बस ऐसे ही। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं एन एस्टीम्ड मेंबर फ्रॉम द ज़ाबिस्ट यूनिवर्सिटी, द प्रोग्राम मैनेजर ऑफ एमबीए। सर, व्हाट इज योर नेम? Masood Ahmed is my name, and I am also program manager for executive MBA. Okay, so sir, mashallah, we are here at the 19th convocation. A lot of your students must be present over here as well, and other faculty members as well. तो सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स इनमें से होंगे जो बहुत ब्राइट होंगे, बहुत सारों से मुलाकात हुई होगी आपकी, कुछ होंगे जो तंग भी करते होंगे लेकिन दिल के अच्छे होंगे। अब सर, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखने जा रहे हैं, तो क्या मैसेज, क्या दुआएं, क्या पैगाम देना चाहेंगे सर आप उनको? देखिए, उनको एक ही पैगाम है कि ये डिग्री जो है, जो इन्होंने MBA क्वालिफाई किया है, दिस इज़ अ डिग्री विच इज़ गोइंग टू प्रोवाइड दैम एन अपॉर्चुनिटी टू इम्पैक्ट पॉजिटिवली द सोसाइटी, द बिजनेसेस, एंड माई मैसेज टू दैम इज़ दैट MBA degree is a mere start, and as I used to tell them during their MBA as well, that they have to keep learning and enjoy this moment, think high, and develop your potential. Another question sir I would like to ask you is that बहुत सारे students अब PhD की तरफ जाएंगे, तो should they go for an international PhD या पाकिस्तान में रहते हुए उनको PhD pursue करनी चाहिए? देखिए, personally I am of the opinion that after completion of your MBA you should spend most of your time in the corporate world,
And MBA is a professional degree. It's not an academic degree in a sense that they should be vying for academic position in academia. Until or unless, yes, they are very much sure that their future lies in higher education institutions. So for me, for the next 3, 4, maybe 5 years, they should work in the corporate sector, and then if they feel yes, there is a niche where they can do research, then they should go for the PhD. As far as the international or local PhD is concerned, I would always say that it all depends upon your area of interest and who is going to be your advisor. So if you find a relevant advisor in local universities of your area of interest, go for local university. Otherwise, if you have an opportunity, why not go for international exposure? Thank you so much, sir. Okay, thank you.